आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूं सफ़ी रज़ा चगताई मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से। बेल्जियम के इंटरनेशनल फ़ोटोग्राफ़र ने न सिर्फ आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान बल्कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में भी उन मनाज़र को अक्सबंद किया है, उन मनाज़र को अपने कैमरे की आँख से महफूज किया है जो इंसानियत के हवाले से मुख्तलिफ़ कहानियाँ पेश करते हैं। उन्होंने एक पूरी किताब लिखी है जिसका नाम कश्मीर वेट एंड सी के नाम से उन्होंने रखा है। उस किताब की आज यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद न्यू प्राइम मिनिस्टर हाउस में एग्जीबिशन नुमाइश की गई है और उन्होंने जो तस्वीरें उस किताब में शामिल की हैं वो तस्वीरें भी यहाँ पर नुमाइश के लिए पेश की गई हैं। बेल्जियम के ये फ़ोटोग्राफ़र न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में भी वहाँ पे भी दौरा कर चुके हैं और इसके साथ साथ उन्होंने फ़लस्तीन में भी वहाँ पर भी जो इंसानियत को दरपेश मसाइल हैं उनको अपने कैमरे की आँख से दुनिया के सामने उजागर किया है। हमारे साथ यहाँ यूरोपीय यूनियन का वफद मौजूद है जो बेल्जियम, स्वीडन और दीगर यूरोपीय ममालिक से यहाँ पर इस फ़ोटोग्राफ़र के साथ आए हैं जहाँ पर ये नुमाइश लगाई गई है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी इस नुमाइश का विज़िट किया है और उन्होंने भी बेहद सराहा है इस इक़दाम से, चूँकि न सिर्फ मकबूजा कश्मीर के जो भारत के मुज़ालिम के सताए हुए जो शहरी कश्मीरी हैं उनको यहाँ पे नुमाया किया गया बल्कि भारत की जानिब से जो गोलाबारी लाइन ऑफ कंट्रोल पर की जाती है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो मुतासरीन हैं उनको भी इन तस्वीरों के ज़रिए से उजागर किया गया। हमारे साथ बेल्जियम के स्पोक्स पर्सन जो इस डेलीगेशन के हैं वो मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अबाउट योर डेलीगेशन, अबाउट दिस एग्जीबिशन स्पेशली। So this is a delegation from European politicians and journalists, and we came here to see with our own life how the people are living in Pakistan and especially in Azad Jammu and Kashmir. You can see on the photographs how the people in the Indian occupied Kashmir are suffering, how their everyday life is going on. But we also wanted to see not only the photos, but to meet the people here, to see what kind of people are living in Kashmir. And now I can see they are very nice people. Their hearts are open. Their hospitality is fantastic. So we are very, very happy that we can see with our own eyes that you people are so nice. So we are very thankful for your kind hospitality. You are a senior journalist, also you work there and also you have been Indian held Kashmir. If you also your team, because in this picture we can imagine how much people suffering in Indian side Kashmir. So what is your observation? What have you seen and your team have seen and picturized this the problem the people suffering in Indian side Kashmir? Sir, you can imagine that such a delegation that you have here in this side of Kashmir can go to the other side of Kashmir where the military is there. There is no possibility to politicians, journalists, human rights activists go and visit the territory to see their own eyes what we are talking about is true or not, because the Indian government doesn't let us go there. So we don't know. We can't see it with our eyes. So we have to just rely on the photos our friend Cedric made on these photos. And we say we believe him because he's a very honest artist. But otherwise, we are asking the Indian government to let us to go there. We don't get the permission, not allowed. It means that they hide something. If there would be what it would be true what they are saying, they would say, okay, you can come and see with your eyes, but we cannot go. So it means they hide something. You know, also in Pakistani held Kashmir, we call Azad Jammu and Kashmir. Right now we are in Azad Jammu and Kashmir. You also have seen here people also living in very freely. That's what we wanted to see, that people are free here. We could come here without any problem. We could meet your Prime Minister, who is a very nice fellow. I liked his speech. I liked his tone, how he was talking about the situation. He was not threatening India. He said, we are suffering from this situation. So for us, it meant everything. It proved that Azad Kashmir is really Azad. The photographer display, every picture has a different story. Exactly. He visited families over there. He could go into the houses of these families. He heard their stories
from their ancestors, their fathers, grandfathers. So he knows much more than we know about that side of Kashmir. I'm not talking about the present political situation, I'm talking about the history of this territory, which is very important also to know because the Europeans don't know anything about the history of Kashmir. Yes. You also know, as international media reported from the Indian side, Kashmir, they are suffering and they are also victimized from the Indian military. So, what's your observation? As can you compare Indian side Kashmir and Pakistan side Kashmir? Of course, you cannot compare. It's completely different. There is freedom of this side, and there is dictatorship on the other side. How can you just compare the two sides? And thankfully, there is peace here. Thankfully, everything is much better here than on the other side. So, yes, hopefully, there will be some solution. In the last 80 years, this problem is not solved. Hopefully, maybe Trump can help us to solve this. Have you any message for international community? They sort out this conflict, this problem in Kashmiri people also suffering from 70 years more than 70 years more. Yes, my message is that don't turn your eyes away from the suffering of the Kashmiri people in the Indian side. You have to just raise your voice. You have to do something. You have to do your job to help those people who are suffering there. Thank you so much. He was from Belgium and spokesperson this delegation. आपको मैं कुछ और लोगों से भी मिलवाता हूँ, वो फोटोग्राफर जिन्होंने ये तस्वीर बनाई है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, फ़लस्तीन में और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में, उनसे भी मिलवाते हैं। और जो उनके आज़ाद जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में जो उनके स्पोक्सपर्सन हैं, उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और बताते हैं कि इस तस्वीरी नुमाइश का क्या मकसद और मुद्दा है और वो क्या पैगाम देना चाहते हैं। So thank you for having me. This work, Kashmir Wait and See, is a journey through the Kashmir region that I started in 2017 in the Indian administrated Kashmir. Afterwards, I was lucky to come and visit AGK, where I have traveled along the LOC and the Nilam Valley, where I could reach some remote villages. From there, I followed in Gilgit-Baltistan. So it's a journey through the struggles of the Kashmiri people, their resilience and their hopes. Okay, so what's the main theme about your work? So as I told you, it's about the human condition. What is important for me is to get close to the people, to listen, to feel, and try to understand the complex emotions and the difficulty of this very specific story. What's the difference across the valley? Indian administrated Kashmir and Pakistani administrated Kashmir. I mean, from the point of view of a photographer, what I try to do is to tell the story of ordinary people in extraordinary circumstances. So for me, what is important is to make no difference between the people. Some are being oppressed, some are being injured by shelling or mortar fire, some others are living a very peaceful life. Where you have seen people suffering against the violence? So as I told you, I have documented the struggles of the people. Both sides. On both sides, yes. There is no any difference. People suffering. I just told you that there is a difference in the struggles. There are differences between the people that are living under the occupation and the one who are living freely. Okay, have there any question? No. Sir, Do you want to give any message? Many conflict in world. Why you select in Jammu Kashmir? So I didn't select it, this issue. I just continue to document the situation of people that are living very difficult time. Whether it is in Palestine, in Iraq, in the Democratic Republic of Congo, or in Sudan. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहजमान बलोच है। मैं पाकिस्तान फ़ोटो फेस्टिवल का फाउंडर हूँ और पाकिस्तान फ़ोटो फेस्टिवल पाकिस्तान का वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो फ़ोटोग्राफी को प्रमोट करती है थ्रू एग्जीबिशंस, थ्रू फेलोशिप, थ्रू वर्कशॉप्स
और पाकिस्तान फ़ोटो फेस्टिवल का मकसद ही ये है कि जो हमारे रीजन में फ़ोटोग्राफ़र्स काम कर रहे हैं या बाहर फ़ॉरेन फ़ोटोग्राफ़र्स जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं या उनकी स्टोरीज़ पाकिस्तान के बारे में हैं या उनकी स्टोरीज़ ह्यूमन सफरिंग या ह्यूमन उसके बारे में हैं, तो वो हम यहाँ पे पाकिस्तानी ऑडियंस को दिखाएं। तो पाकिस्तान फ़ोटो फेस्टिवल ने ये जो एग्ज़िबिशन है ये कश्मीर EU काउंसिल के साथ मिलके ऑर्गेनाइज़ की है और इस एग्ज़िबिशन के अंदर जो काम है वो सेड्रिक का है। सेड्रिक एक बेल्जियम बेस्ड फ़ोटोग्राफ़र हैं जिन्होंने बहुत सारे जगहों पे जाके काम किया है। उन्होंने फ़लस्तीन में जाके काम किया है, उन्होंने कांगो में भी जाके काम किया है और उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी काम किया है और हाँ जी, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में भी काम किया है और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी काम किया है। तो जो सेड्रिक का काम है वो मोस्टली ह्यूमन स्टोरीज़ के ऊपर होता है, लोगों की कहानियों के ऊपर होता है। तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है 2017 में स्टार्ट किया था और फिर 2017 से 2024 तक वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर में भी जाते रहे हैं और पाकिस्तान वाली साइड पे भी आते रहे हैं और उन्होंने दोनों साइड के लोगों की कहानियाँ डॉक्यूमेंट किया है। तो जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो इन्होंने एक बुक की शक्ल ली इस प्रोजेक्ट ने और उस बुक का नाम है कश्मीर वेट एंड सी। और वो जब कंप्लीट हुई तो हमने और अली रज़ा भाई कश्मीर EU काउंसिल जो है हमारी ब्रसल के अंदर, हमने मिलके सोचा कि ये जो कश्मीर की कहानी है पाकिस्तान से रेलेवेंट है और कश्मीर के लोगों से रेलेवेंट है, तो इस काम को कश्मीर के लोगों को दिखाया जाए। तो उस सिलसिले में पाकिस्तान फ़ोटो फेस्टिवल ने मिलके कश्मीर EU काउंसिल के साथ एक टूर एग्ज़िबिशन डेवलप की, जिसके अंदर हमने पहला जो एग्ज़िबिशन है वो इस्लामाबाद PNCA में किया। 3 दिन के लिए हम वहाँ पे थे और उसके बाद आज हम मुज़फ़्फ़राबाद आए हैं और यहाँ पे हम 31 तारीख तक हैं और ये एग्ज़िबिशन ओपन है फॉर पब्लिक और पब्लिक आके देखे, लोगों की कहानियाँ सुने और फ़ोटोग्राफ्स देखे ताकि उनको अंदाज़ा हो कि लोगों की क्या कहानियाँ हैं और वो किस तरह बॉर्डर के उस तरफ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो जो इस तरफ बॉर्डर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सारी आप जब तस्वीरें देखेंगे और उन तस्वीरों में जब आप सेड्रिक से जो फ़ोटोग्राफ़र है वो भी आए हुए हैं उनसे बात करेंगे तो आपको बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी जो आपको नहीं सुनाई देती। तो इस एग्ज़िबिशन से बहुत सारा जो फ़ायदा है वो ये है कि आप कहानियाँ जो हम डेली लाइफ में नहीं सुनते वो आपको सुनने को मिलेंगी। ये सारी तस्वीरें ब्लैक एंड वाइट क्यों? देखें सेड्रिक का अगर आप काम देखेंगे, उन्होंने जो फ़लस्तीन में भी काम किया वो भी ब्लैक एंड वाइट है, जो कांगो में भी काम किया वो भी ब्लैक एंड वाइट है। तो ये फ़ोटोग्राफ़र की चॉइस होती है कि वो कलर में काम करे या वो ब्लैक एंड वाइट में काम करे। तो सेड्रिक का जो स्टाइल है और उन्होंने जो ब्रसल में भी काम किया वो भी ब्लैक एंड वाइट में। तो सेड्रिक हमेशा ब्लैक एंड वाइट मीडियम चूज़ करते हैं, ब्लैक एंड वाइट स्टाइल चूज़ करते हैं, तो इस वजह से वो ब्लैक एंड वाइट में। कहना चाहते हैं कि हर तस्वीर एक अलग स्टोरी, एक अलग दास्तान रखती है। बिल्कुल, देखें इस एग्ज़िबिशन के अंदर हमारे 3 सेक्शंस हैं। एक हमारा जम्मू कश्मीर है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, तो उन्होंने वहाँ पे 2-3 साल जाके जर्नलिस्ट के साथ जो एक्टिविस्ट हैं उनके साथ मिलके जो वहाँ पे अट्रॉसिटीज़ हैं उनको डॉक्यूमेंट किया, उनकी डेली लाइफ को डॉक्यूमेंट किया। तो हमारे एग्ज़िबिशन में एक सेक्शन वहाँ का है, एक हमारा आज़ाद जम्मू कश्मीर का है जिसमें यहाँ पे जो लोगों की कहानियाँ हैं उसको डॉक्यूमेंट किया, और फिर जो तीसरा सेक्शन है वो हमारा गिलगित बल्तिस्तान का है। तो उन्होंने हमारे जो 3 रीजन हैं उन तीनों रीजन में जाके काम किया पिछले 8 सालों में, और हमारी एग्ज़िबिशन में भी वो तीनों सेक्शंस हैं। ये एग्जीबिशन कहाँ आप लगा चुके हैं? अभी हमने इस्लामाबाद PNCA में 3 दिन एग्ज़िबिशन की। हम 2 दिन के लिए मुज़फ़्फ़राबाद में हैं। हम अगले 1st एंड 2nd हम मीरपुर में हैं, और फिर वहाँ से कश्मीर डे के ऊपर हम NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में ओपन कर रहे हैं और वो 10 तारीख तक रहेगी। पाकिस्तान के बाहर भी ये नुमाइश हुई है? जी, जब बुक कंप्लीट हुई तो इसका जो इंटरनेशनल लॉन्च है वो फ्रांस में हुआ। वहाँ पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जिसको विज़ा पॉलीमार्च कहते हैं। तो वहाँ पे ये बुक लॉन्च हुई और वहीं पे ये काम दिखा, और उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कश्मीर EU काउंसिल अली रज़ा भाई के साथ कि हम इस काम को पाकिस्तान लाएं और पाकिस्तान की आवाम को ये दिखाएं। I'm Maria Lucas, coming from the Netherlands, and I'm a peace activist.
I come here as part of a delegation from Europe with the photos of Mr. Cedric, who made these pictures to show how the people in the Kashmir, how they live, and the sadness of the people. I was working in Old Kashmir, so in Srinagar, also in Muzaffarabad, also in Mirpur, not in Gilgit-Baltistan, but I worked on both sides of the LOC with other peace activists, like lawyers, like the women who lost their husbands or their brothers. And now I am part of this European delegation to expose the work of Mr. Cedric and show these pictures. Today in Muzaffarabad, yesterday we were in Islamabad, tomorrow we will go to Mirpur and also end up in Lahore. As you are freely moving here in Pakistani Jammu and Kashmir, can you imagine, can you travel in Indian side Kashmir? I traveled in Indian side Kashmir. I did so. And so it is possible. And this, of course, it depends. Are you a tourist? Are you have What's a your family? observation, Indian side Kashmir and Pakistani side Kashmir? It's both is beautiful. So that is must say. The people are beautiful. The people are colorful, and that is what I can say from both sides. And of course, the situation for the people is different. Like it's also different in other countries. And it depends where you live. But it is, that's what I want to say. As there Okay. are people moving freely everywhere, can imagine that outside, our outside? You must see about the pictures, what is happening on the ground, what is the ground situation, and then you can judge for yourself. इन पिक्चर से ये मैसेज मिला है कि ये कश्मीर को रिप्रेजेंट करिए, बेसिकली उसके दर्द को, उसके गम को। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर को किसने रिप्रेजेंट किया। इससे पहले सारे टाइम पे यही था कि कश्मीर एक दायरे के अंदर बिल्कुल बंद था। अब उसको इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्सप्रेस किया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन का एक तरह से तो हम लोग शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हम लोगों को कश्मीर को बेसिकली आगे लाया, उसके बारे में बात की गई। Want to tell you, not only you, but I want to tell all the world that today is here the exhibition of photos from occupied Kashmir. These photos are saying very harshly that the Indian government have to be punishment by 8 lakh army, more than 8 lakh. We condemn it on 26 January. India government celebrate his democratic day. He is not democratic country. I want to say him and all the international human, all the international countries that they come on the table and say to Hindustan government, come on the table. We are the determined by Mohtaram Benazir Bhutto Shaheed. We want soft ladder. आपने इन तस्वीरों में क्या रंग नुमाया देखा, थोड़ा इस बात को उर्दू में Here the pictures are saying again and again that the Bharat have to be crushed, the fundamental rights of the Kashmiris in occupied Kashmir, so that short mein yahi I want to tell that our Qaid Mohtaram Benazir Bhutto Shaheed have to set the soft borders. We Kashmiri want all the world peace, 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 and we want come on the table